हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆ. Many great sages, saints, mentors and oracles have descended on this Punya Bhumi Bharatavarsha on critical times and helped the lesser mortals to control the degeneration and decay of dharma. One such great soul, Krishnatma, who came on this earth in the previous century and propagated the doctrine of Krishna consciousness, who was a boon to mankind, is His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವಿಶ್ವಗರ್ಭದ ಸತ್ಯ ಕಂಡವನು ನೈಜ ಋಷಿ ಕಂಡ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆವಾತ ಆಚಾರ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಬೋಧಕನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರು ಬೋಧನೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವನೇ ಶಿಷ್ಯ ಋಷಿಯಾಗುವುದೇ ರುಜುವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ ಋಷಿಯಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಗುರುವಾಗಿ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 14 ಬಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 108 ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 5,000 ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಅವರ ಮುಖೇನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತವಾಗಿಸಿ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಸದ್ಧರ್ಮ, ಸದ್ಭಕ್ತಿ, ಸದ್ಭಾವನೆಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಅವರು ರಾಮನಾಮ ದಿವ್ಯಾಮೃತಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಿದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ವಿತರಿಸುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಅವರದೇ ಕನಸಿನ ಕೂಸಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಇಸ್ಕಾನ್. ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಪಯಣವು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಹಾಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮೈಸೂರಿನ ಪಯಣವೂ ಸಹ 1999ರಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲದ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಗವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖೇನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. Under the able guidance and dedicated hard work of then President Stoka Krishnadasa, 9 acres of open land was allocated to ISKCON Mysuru. In the backdrop of lush green social forestry, Navavrindavana Dhamma, for which Shilanyas is going to be done on this auspicious day, will sure become the new abode of Lord Sri Radha Krishna. We at ISKCON are eternally grateful to the 2,000 plus life members who believed in the cause and supported us wholeheartedly, and today's Shilanyas ceremony of Navavrindavana Dham would not have been a reality without their unconditional and dedicated support. May I have a round of applause for those kind-hearted religious ladies and gentlemen of the city of Mysore who have supported the cause of Krishna consciousness in the city. Thank you. I'd also like to mention that ISKCON temple at this is going to come up here is based on Hoysala architecture. I hope this August gathering would not mind if I take a minute to explain the same. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 11ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ 14ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಮಂಡಲಾಧೀಶರಾಗಿ ಆಳಿದ ಹೊಯ್ಸಳರದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕೊಡುಗೆ. ಭಾಗಶಃ ಚಾಲುಕ್ಯ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಸ್ವಯಂ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೊಯ್ಸಳರದ್ದು. ಹೊಯ್ಸಳರ 3 ಶತಮಾನಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 100 ದೇವಳಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪುನೀತರಾದರು ಎಂದು ಶಾಸನಗಳು ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಊರ್ಜಿತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಸುಮಾರು 70ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಬೇಲೂರಿನ ಹಳೇಬೀಡಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ಮಂದಿರದ ಬಳಿಕ ಬರುವುದೇ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ 32 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಮನಾಥಪುರದ ಕೇಶವ ದೇವಾಲಯದ್ದು. ಇವಲ್ಲದೆ ಬೆಳವಾಡಿ, ಹೊಸಹೊಳಲು ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ಮಂದಿರಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ, ಸ್ಮಾರಕಗಳ ನಗರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯುತ್ತ ಇಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಹೊಯ್ಸಳ ಕಲಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನವವೃಂದಾವನ ಧಾಮದ ಮುಖೇನ ಮೈಸೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಾ ವೈಭವಗಳಿಗೆ ಹೊಸದನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತದೆ. 2000 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 1500 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಯೋಜನೆ ಇಂದು 11 ರಾಜ್ಯಗಳ 27 ಜಾಗಗಳ ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ನೀಡುತ್ತಾ ಸರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಹಾಜರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ 25,000 ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. Ladies and gentlemen, His Excellency Governor of Karnataka, Shri Vajubhai Rudabhai Walaji has arrived at the Yagnashala. Shilanyasa Homa and land breaking ceremony will be taking place. You can witness these events on the LED screen. ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. Thank you very much, the distinguished guests. May I now request the August gathering to raise as we are commencing the program with the national anthem. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾರಂಭ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ವನಿತಾ ಸದನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. With this feeling, we salute the Jagadguru Lord Krishna and offer him salutations through invocation by Atishay Jain and Suman. स्वागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण भोगदाप्त सुलभ सुपुष्पगन्धकळभा भोगदाप्त सुलभ
सुपुष्पगन्धकळभ कस्तूरि तिलक महिमा मम कान्तनन्द गोवनन्द स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरि सदना मृदुवदना मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरि सदना मृदुवदना मधुसूदन इह स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶುಭ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಅತಿಶಯ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಂತ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಏವಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೋ ದೇವ ಸದಾನಂದ ಪರಾತ್ಪರಃ ಆತ್ಮಾ ರಾಮಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾ ನ ಸಮಾಗಮಃ. The Lord of Gokula is the supreme Godhead, and we at ISKCON always pray and hope that He will and shall remain as our leading light. May now request the Honorable Governor of Karnataka, His Excellency Vajubhai Rudabhai Valaji, to kindly light the divine lamp. Before that, I request His Excellency to garland Srila Prabhupada's deity and then proceed to the lamp. I also request all the dignitaries and the dais to kindly join His Excellency in this process. ಲ್ಯಾಂಪು ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟಾ ರೈಟಾ? And the fourth chapter of Bhagavad Gita, Jnana Karma Sannyasa Yoga, Lord Krishna says, Nahi jnanina sadrusham pavitramiham ityati, which means, in this world there is nothing as pure and majestic as metaphysical realization. ISKCON is in the constant pursuit of this elusive grandeur. The Shilanyas of Navabrindavan Dham, the ISKCON Mysore Cultural Center, is a giant leap towards acquiring that Krishna Prajna. On this momentous occasion, we are all blessed by His Divine Grace, Srila Prabhupada, and may now request the Honorable Governor of Karnataka, His Excellency Vajubhai Rudabhai Valaji, to unveil the plaque and give an auspicious beginning to the proceedings.
Ladies and gentlemen, there are 2 plaques on either side of the dais. I request all of you to kindly view the unveiling of the plaque and focus on the LED screen. ಓಪನು ಈ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಆಗೋಯ್ತು. I thank His Excellency for unveiling the plaques. It's only in the Indian culture that one finds the noble concept of treating guests as God, Atithi Devo Bhava. Even when it comes to Shodasha Upacharas, we offer to God and say, Asanam Samarpayami. So in essence, God is also a guest, and for we Indians, guest is God. In order to welcome all the devotees assembled here, may I now request His Grace Jai Chaitanya Dasa, President of ISKCON Mysuru. ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೈಸೂರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಮೈಸೂರು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೈ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸರನ್ನ ಇದೀಗ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ 3 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಜೈ ಚೈತನ್ಯ ದಾಸ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Hare Krishna, Namaste and good morning. Praying at the feet of our beloved Acharya and founder of ISKCON, Sri Srimad Abhaya Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, I am happy to be present here to welcome you on the occasion of the foundation stone laying ceremony, Shilanyas, of the ISKCON Mysore Cultural Center to be called Navabrindavan Dham. This 9 acres of land, overlooked upon by Sri Chamundi Devi, the divine sister of Lord Sri Krishna, was allotted to ISKCON for this purpose by the government of Karnataka. We express our heartfelt appreciation for the same. We have got this grand opportunity to build a structure of monumental value that will add another feather to the heritage of the great city of Mysore. We are eager to set out on this venture of building a structure of architectural style of the Hoysala dynasty in the line of the world-renowned structures of Somnathpura, Belur and Halebeedu. On behalf of ISKCON Bangalore Society, its branch ISKCON Mysore and the Hare Krishna movement, I extend a very hearty welcome to the Honorable Governor of Karnataka, His Excellency Sri Vajubhai Rudabai Wala, who has been a well-wisher of our group here in Karnataka and a supporter of the activities of Akshaya Patra in Gujarat. We heartily welcome you, sir. We extend a hearty welcome to the Honorable Minister for Public Works and Development, Government of Karnataka, Dr. H.C. Mahadevappa, who personally and through his government has been a strong support for our activities. As the district in charge minister for Mysore, your presence was important for us. We express our appreciation for the same, sir. Since time immemorial, it has been the royal rulers who have been in the forefront in promoting monuments for the social and spiritual upliftment of people. Hence, it is most apt that the royal family is here with us today. It is our pleasure indeed to welcome Her Highness Dr. Pramoda Devi Wadayar. Her Highness has been very kind towards us, appreciates our activities and shows great interest in the teachings of Lord Sri Krishna. We welcome you, Madam. We wish to extend a hearty welcome to Sri M.K. Somshekar, the Honorable MLA of the local area. We are grateful to him for his assistance in the different annual functions of our organization and for his continuous support and encouragement for its activities. We welcome you, sir. We wish to extend a cordial welcome to Sri M.J. Ravi Kumar, the worshipful Mayor of Mysore City, for his enthusiastic support and interest in making this upcoming project a success.
We very much appreciate the cooperation extended by his team in the Mysore City Corporation in the matter of completion of all the formalities of sanction for this project. We welcome you too, sir. We extend our welcome to His Grace Madhu Pandit Das, who has come to grace this occasion. He is the Governing Body Commission representative for ISKCON Mysore Temple and Chairman for ISKCON Bangalore Group and the Akshaya Patra Foundation. We express our gratitude for his committed leadership. We appreciate all the support by the Bangalore team for conceiving this design for the project in Mysore and for the continued support at different stages. We welcome you, Prabhu. I extend welcome to His Grace Stoka Krishnadas, President of Hare Krishna Movement, Chennai. He was the President of ISKCON Mysore until the year 2007. It is during his tenure that this land was allotted to the organization. We appreciate your efforts and contribution for the growth of ISKCON in Mysore. We welcome you, Prabhu. We also welcome Rajiv Gurchandas, President of ISKCON Hubli, who is present here with us. There are amongst us in this audience personalities who have been very instrumental in the growth of this organization in the city of Mysore, in identifying and securing this land for the organization. We welcome them all. There are also our continued supporters and patrons by whose participation and contribution the Krishna conscious activities have been carried on in the city. There are also our well-wishers who have magnanimously come forward in supporting the construction and are committed to stand by us to complete this project. And also there are the team from CRN Architect Chennai who have taken the responsibility for furthering this project. Our heartfelt welcome to you all. We specifically welcome the officials of various departments of administration like MUDA and others who are present here. We appreciate all the cooperation you have extended to us. Along with this, let me also welcome Shri Vijay Yeshudas, the son of legendary K.J. Yeshudas, who is present here to extend his support. Lastly, I also welcome all the missionary and congregation devotees of ISKCON for being present on this occasion. We value all your prayers and blessings. Thank you. We thank His Grace Chaitanya Dasa for extending a warm welcome to all the dignitaries and the August gathering. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೌಕಾಕೃತಿಯ ಎತ್ತರದ ರಂಗಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಾಕೃತಿಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ವಿಶೇಷ. ಭಕ್ತರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪಥವೂ ಸಹ ಇದೇ ಚೌಕಾಕೃತಿಯ ಮಂಟಪದ ಮೇಲೆ ವಿರಚಿತವಾಗಿ ಜಗತಿ ಎಂದು ಕರೆಸಲ್ಪಡುವುದು ಹೊಯ್ಸಳ ಶೈಲಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಮುಖದ್ವಾರದಿಂದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಸದ್ಭಾವನೆ, ಶಿಲ್ಪ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೋನ್ನತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹದೆಡೆಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹೊಯ್ಸಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ. All Hoysala architectures culminates in one philosophy of bhakti, that is devotion. They are similar in the path of circumambulance, pradakshina, and also all Hoysala temples are star-shaped. As the devotee enters the sanctum sanctorum, he envisages the beauty and the divinity of the temple by himself. In the similar way, ISKCON Mysuru has conceptualized Navavrindavan Dham. Now may I request His Excellency, the Governor of Karnataka, Sri Vajubhai Rudhabhai Balaji, to unveil the model of the temple and give us, the devotees, a glimpse of this eternal and divine beauty. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Photographer friends, please make way for the audience. Photographer friends, please make way for the audience to have a look at the model of the temple, please. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಚೇತಸ ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ
ಮಯಿ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಃ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಸತತಂ ಭವ. ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿತರಾದ ಆ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. There are so many selfless who did not bother about the phala or returns and selflessly dedicated their efforts towards this goal of making Navavrindavana Dhamma a reality. We at Mysore ISKCON would like to recognize their untiring efforts and would like to felicitate them. First, we would like to felicitate the divine souls who helped ISKCON Mysore to procure the land. His Grace Tuka Krishna Dasa ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರ ದಾಸ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕನಸಿಗೆ ಇಂಬಾದಂತಹ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. I request His Excellency to honor these souls. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋ ಮಧುಸೂದನ್ ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು. ಶ್ರೀಯುತ ಗೋ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I request His Excellency to honor felicitate Shri Go Madhusudan. ಅರಮನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಘವನ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಘವನ್ entrepreneur. I request him to kindly come to the dais and accept our honor. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಿ. We at ISKCON Mysore would like to recognize Her Grace Bhaktilata Devi Dasi, who conceptualized the design of Navavrindavan Dham. We also thankfully recall the efforts of Shri Prashant Katkor, the concept architect, for furthering this mega project. May I request Her Grace Bhaktilata Devi Dasi and Shri Prashant Katkor to kindly come onto the dais and accept our honors. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Shri Prashant Katkor, the concept architect. Ladies and gentlemen, next we would like to recognize the
untiring efforts of Mrs. CRN Consultants Private Limited, Chennai, the principal architects and structural consultants who have been given the responsibility for furthering the project. May I request Shri Srinivas Rao and Srimati Kavita Selvaraj to come to the dais and accept our honors. May I now request Mr. Srinivas Rao. Srimati Kavita Selvaraj. Now we enter into another stage wherein conceptualization will become a reality. If now Vrindavan Dham has become a reality, the contribution of founder patrons, of course, it's our respectful duty as well as humble desire to honor, recognize and thank those divine souls who have immensely contributed for the genuine cause. May I now request Sri Janardana Bhatt to kindly come to the dais and accept our honors. Sri Janardana Bhatt. ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Srimati Ratnayam. Sri Ramjanam. Sri Ramjanam. Thank His Excellency for honoring these dedicated souls. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, it's my proud privilege to introduce His Grace Madhu Pandita Dasa, Chairman, the Akshaya Patra Foundation, Chairman, the India Heritage Foundation, and the President, ISKCON Bengaluru, and the governing body representative, ISKCON Mysuru. His Grace Madhu Pandita Dasa has a BTech degree from IIT Mumbai, and while pursuing his MTech in IIT Mumbai, he dedicated his life to serving the mission of His Divine Grace, Srila Prabhupada. 3 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಮುಡುಪಾಕಿಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಮಧು ಪಂಡಿತ ದಾಸರ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಂದಿರ 1997ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 16 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಯೋಜನೆಯ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತರು 11 ರಾಜ್ಯಗಳ 27 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. Currently, His Grace Madhu Pandita Dasa is working on setting up an Indian heritage and cultural park called Krishna Leela Theme Park in Bangalore. May I now request His Grace Madhu Pandita Dasa to make the benediction. ओम अज्ञानतिमिरं दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया
श्लाघया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Excellency the Governor of Karnataka, Vajubhai Vala, Honorable Minister Shri Mahadevappa, Her Highness Dr. Pramoda Devi Vadika, Shri M.K. Somashekar, MLA, M.J. Ravi Kumar, Mayor of Mysore, my god brothers Jai Chaitanya Das, President of ISKCON Mysore, Stoka Krishna Das of Hare Krishna Movement Chennai, and Madhusudan, ex-MLC, and all the devotees, Rajiv Lochan Das from Hubli, and all the devotees assembled here. Today is the auspicious day that we all waited for years. That day when we could start the construction of New Vrindavan Dham Cultural Center. ISKCON's effort to erect and yet another cultural monument in Mysore is to fulfill one of the several dreams of Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON. The dream of presenting Vedic wisdom and culture in the most appropriate manner for attracting the modern minds. A dream to create a hub for serving humanity through social initiatives like Akshaya Patra. Today, the world is at the pinnacle of progress in science and technology. It has taken humanity to great heights for material achievements, unprecedented innovation in every aspect of life, in use of computers and infotech. We should have been creating a happier and a happier civilization. But surprisingly, it has resulted in creating dissatisfied and frustrated individuals. Today's typical citizen is a man without peace. Interestingly, about a century ago, an average man on this planet was more satisfied and peaceful, although he had lesser facilities for his sense enjoyment. Despite material progress, the society today is filled with more and more people with mental distress and newer material diseases for the body. What has gone wrong in spite of this tremendous so-called progress? Where does the problem lie? By studying the status of the world, it is clear that we march towards material progress. But man has not endeavored to progress in the spiritual direction. That is where the problem lies. It's a lack of balance between material progress and spiritual growth, both as individuals and as a society. The lopsided, imbalanced growth has resulted in man becoming more and more greedy and less and more peaceful, more and more frustrated, because there is no solution to greed except obliterating greed. An environmental crisis has been created from reckless and mindless excessive consumption of natural resources by man. This is caused by man's greed. It is very clear that if the Western model of consumerism is blindly pursued in India, we would also become responsible for aggravating this environmental crisis. Overconsumption has been clearly identified by scientists, religionists, politicians, and environmentalists as a single biggest cause for environmental crisis the world is facing today. When there is no peace, there is a question of happiness. Reflecting on this reality, the vital question would be, can modern civilization be considered truly progressive? The answer is no, unless it is balanced by spiritual growth. The ancient rishis and philosophers of this country had adopted a different means to unravel the secrets of existence through tapasya and austerity. Their ideas and wisdom regarding the science of sustainable living were recorded in the Vedic scriptures thousands of years ago. This knowledge formed a basis and guide for man's balanced material and spiritual growth under the subjects of dharma, artha, kama, and moksha, and bhagavat prema. Vedic wisdom is not against pleasure, kama, and not against economic development, artha,
as long as it is regulated by religious principles of dharma for the ultimate purpose of liberation or moksha and developing Bhagavat Prema. Today, the world is largely influenced by the Western culture and it is playing the game of unrestricted artha and kama for its own sake, largely focused on immediate gains, ignorant of the higher principles and purposes of human life of dharma, moksha and prema. This has led to an environmental crisis of pollution, climate change, shortage of natural resources. So it is not at all surprising that new religion of man of maximizing exploitation of material resources by mutual competition is leading to this great crisis. Just like a fever is a symptom of a deeper malfunctioning of the body, the environmental crisis is only an alarming symptom of man's ignorance of higher values and purposes of life, of dharma and Bhagavat Prema. The solution lies only in influencing large number of people to change their values towards the voluntary simplicity of lifestyle. Spirituality and religion can play a major role in creating value systems that will reduce consumption and stop this environmental degradation. Nava Vrindavan Cultural Center will be a center for disseminating these spiritual principles for a peaceful life on earth. At the heart of every culture is a thought system that consists of varieties of shared beliefs and values. What is culture? How are cultures formed? Over long periods of time, its values and beliefs get reflected and coded as a way of life in the form of customs and practices, religion, language, art forms, festivals, and so on, creating a unique culture. Vedic culture is based on a very deep understanding of man's essential eternal nature and is as ancient as man. What are the most important shared beliefs of our Indian culture that distinguishes us from several other Western cultures? It is our belief in Atma, Paramatma, Karma, Dharma, Moksha, Bhagavat Prema. We believe in Atma, that we are eternal beings beyond these bodies, that we inhabit for a short time from birth to death. We believe in Paramatma or Ishvara, the eternal, omnipotent, omniscient God, who creates this world and who respects the free will of each of us. We believe in karma, that life situations are determined by law of universal justice through nature's reward and punishment. We believe not only in free will of human beings, but also in the destiny that circumscribes every one of us. We believe in Kala, eternal time, as a force that moves everyone's life in this world according to individual karma, under the direction of the God. We believe in Dharma, the eternal relationship of God and us. We believe that the essence of every being is service to God and humanity. We believe that every one of us are divine and perfection of life is to attain God and His love. We believe in tolerance and acceptance of other religions as appropriate paths to God, suited to different time, place and circumstances, and suitable for different stages of soul's journey to God according to their respective faiths. This profound Vedic culture is in direct contrast with materialistic culture, which is based on the idea that I am just this body. Modern materialistic culture does not accommodate the parallel reality of another substance called Brahman, Atma, consciousness, which is higher non-material spiritual energy of God. There is no higher purpose according to this material philosophy other than what relates to the body itself. Hence, such materialistic culture understands perfection of life to be only perfection of enjoyment of the body. It is short-sighted culture based on superficial understanding of man's nature, that he is the body and death is the end of everything. It is indeed dangerous, since when stretched to its extremity, it will only create polished animals out of human beings and not gentlemen. Any educational system is influenced by culture and vice versa. Our traditional educational system has been imperceptibly replaced by the Western system over the last few centuries. Thus, through the newly introduced education system, Western culture gradually invaded our culture. Srila Prabhupada, our founder Acharya, wanted this movement to play an important role to set right this anomaly by promoting and preserving the valuable Vedic culture among the younger generation. Today's children are extremely intelligent.
We want our children to talk with ease and understanding the ideas of Atma, Paramatma, Dharma, Karma, free will, destiny and moksha, etc. Navavrindavan Dham will fulfill its mission if we succeed in making the youth of Mysore responsible, God-loving citizens with a desire to serve and not exploit nature and humanity. It is high time we took steps before we are consumed by materialistic Western culture. The time has come to set the balance right. Let us boldly use science and technology to educate children in Vedic knowledge and culture so as to inculcate in them profound values and truths of existence right from childhood. Our Acharya Srila Prabhupada taught us to engage even material things in service of God and mankind. He encouraged us to use everything modern to enhance the presentation of our cultural values and beliefs in a scientific manner that is appealing to modern minds. Even as we have taken a lead in applying technology to address social problems of hunger among school children through our Akshayapatra program, we wish to take a leading step in this direction by building these kinds of high-tech temple-cum-cultural complex in an attempt to bridge material imbalance in this society. This is our mission here at Navavrindavan, to bring the best of the West and the East for the benefit of mankind. We want to make our youth proud enough to proclaim to the world that they are part of the culture that has rational solutions to all problems of mankind, and that they are not part of a superstitious cult as wrongly portrayed by the foreign invaders over the centuries to the rest of the world as well as to all of us, the English-speaking Indians. Now Vrindavan Dham, Mysore, will be an abode of Lord where visitors will learn to look at our heritage from a very rational and a scientific point of view. The Navavrindavan Dham Cultural Center, although architecturally a monument, the essence of its existence is to promote learning of Indian philosophy through scriptures like Bhagavad Gita, Bhagavatam and other Puranas, and promote traditional Indian arts, dance, music, etc. Navavrindavan Dham, Mysuru, besides being a cultural center, will be a hub for many more social initiatives like Akshayapatra. On this occasion, I would like to announce the setting up of a free residential schools all over the country for underprivileged children from the Hare Krishna movement. These schools will be expanded to colleges eventually. Our plan is to provide free residential education to totally 50,000 students all over the country. As part of that program, which is called National Talent School, Navavrindavan Dham will be setting up a free residential school for 2,000 underprivileged children near Mysore in Mahadevapura. I would like to make a fervent appeal to all of you to contribute their might generously to make this project a success. The scriptures extol the rareness of opportunity to participate in building a Vishnu temple. The Narasimha Purana says, "O devoted one who builds a beautiful temple of Lord Narasimha will be freed from all sinful reactions and will enter Vaikuntha planets." In Skanda Purana, the following verse is there. Just by starting the construction of temple for Lord Krishna, sins committed in 7 births will be wiped out, and one will deliver his forefathers who are suffering in hellish planets. On this auspicious occasion, we seek the blessings and good wishes from Srila Prabhupada, our founder Acharya of the Hare Krishna movement. We are very grateful to His Excellency, the Governor of Karnataka, and all the dignitaries who have come here today to witness and grace this Bhumi Puja, and pray to Lord Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu to give us all the strength and intelligence and skills for accomplishment of this grand vision for the upliftment of mankind and glory of God. Thank you very much. Hare Krishna. I thank His Grace Madhu Pandita Dasa for making benediction. Thank you. Ladies and gentlemen, it's also time to express our gratitude to all the dignitaries who have added color to our dreams. I request His Grace Madhu Pandita Dasa to present mementos to dignitaries as a token of our respect and gratitude. We request His Excellency, the Governor of Karnataka, Shri Vajubhai Rudabhai Walaji, to accept our honors.
ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಇದೀಗ ಇಸ್ಕಾನ್ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ರಾಜಮಾತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ವತಿಯಿಂದ. ಸಮಾರಂಭದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ.ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪೌರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ.ಜೆ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. Thank you, Business, for honoring the dignitaries. Our ancient scripture says thus, and I quote, Santa sadabhigantavya yadinoparishantapi yastu swaira katadesham upadesha bhavantita, which means we should always be in the presence of learned people or oracles. Though they don't give any sermons, their mere words or conversation will be the pearls of wisdom. May I now request the Honorable Governor of Karnataka, His Excellency Shri Vajubhai Rodabhai Balaji, for his musings. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मैसूर के स्थान पर आज जो नव वृंदावन धाम का शिलान्यास हुआ है, उसी अवसर पर उपस्थित आदरणीय इस्कॉन के सोसाइटी के चेयरमैन, अक्षय पात्र फाउंडेशन के सब लोग जानते हैं ऐसा आदरणीय श्री मधु पंडित दासा जी, आदरणीय श्री PWD मिनिस्टर एंड डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर माननीय श्री डॉक्टर H.C. महादेवप्पा जी, यहाँ मैसूर पैलेस के हर आइनेस डॉक्टर पद्मा देवी वाडियर जी, श्री M.K. सोमशेखर जी, श्री M.J. रवि कुमार जी, श्री जय चैतन्य दासा जी, यहाँ पधारे हुए सब सज्जनों, देवियों, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले जो आज इस्कॉन की ओर से मैसूर की धरती पर नवा वृंदावन धाम यानी नव वृंदावन धाम का निर्माण का प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए इस्कॉन इंस्टीट्यूट को मैं मेरी ओर से, कर्नाटक की प्रजा की ओर से और आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। मित्रों, इस देश में आज दो पद्धति के बीच में लड़ाई हो रही है। एक सिस्टम है भौतिकवाद और दूसरा है आध्यात्मिकवाद। भौतिक और आध्यात्मिक की टसल में
भौतिकवाद आदमी को लग्जरियस लाइफ देता है, मगर उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिले ऐसा कोई तरीका भौतिकवाद में नहीं है। ये आध्यात्मिकवाद ही हमारी भारतीय संस्कृति का बेस है। मैं और तुम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं ने, ये कोई म्यूजिकल फंक्शन नहीं है, म्यूजिकल नाइट नहीं है, यहाँ कोई डांस होने वाला नहीं है, तो भी हम यहाँ एकत्र हुए हैं। वो क्यों एकत्र हुए हैं कि अपने लहू में आध्यात्मिकवाद का संस्कार है, वो संस्कार हमको यहाँ लाए हैं। मित्रों, आज जो हम जिसकी लिए कार्य करने के लिए आए हैं, वो मैं नहीं कहता, सारे वर्ल्ड कहते हैं। और श्रीनिल प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण का चरित्र, कृष्ण का कॉन्शियसनेस, वो सब हिंदुस्तान की सीमा तक मर्यादित उसको नहीं रखा। सारे विश्व में जाकर उन्होंने कहा कि कृष्ण क्या चीज है, कृष्ण की विचारधारा क्या है। वो जो प्रचार और प्रसार करने वाले श्रीनिल प्रभुपाद जी मां भगवान जैसा आदमी था। मित्रों, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान के एक एक आदमी में अपनी राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, अपना राष्ट्र को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, अपने राष्ट्र को सिर्फ रक्षा नहीं, सारे विश्व को संस्कारित करने के लिए इस देश में ताकत है। मगर आज कम भाग्य से हम कहेंगे सभी लोग पैसे के पीछे है। कोई सत्ता के पीछे चल रहा है, कोई पैसे के पीछे चल रहा है, कोई अपना डेजिग्नेट उसको मिले, ज्यादा मान मर्यादा मिले, उसी के लिए पड़े हुए हैं। इस देश में पैसे वाले की, सत्ता वाले की और मान मर्यादा वाले की कोई कीमत नहीं है, जितनी कीमत ये इस्कॉन के साधु संतों की है ने, वो राष्ट्र को समर्पित होने वाला है। इन्होंने क्यों अपना जीवन समर्पित किया, किसके लिए किया? वो क्या अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया? इसीलिए नहीं किया। इस देश का कोई भी साधु और संत हो, वो पब्लिक का जीवन किस तरह से उसको जीना चाहिए, वो सिखाने के लिए वो राष्ट्र में साधु का और सन्यास लेते हैं, साधु बनते हैं। एक एक साधु यहाँ देश का एसेट होता है। मैं ज्यादा तो तारीफ नहीं करूंगा। अभी मधु प्रसाद जी ने जो लेक्चर दिया ने, मैं कहूंगा उसकी एक छोटी बुकलेट बनाकर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कि जिससे मालूम हो कि कृष्ण कॉन्शियस क्या है। एक ही आदमी हम कहते हैं, सारे विश्व में जो नारा लगाएगा हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे रामा रामा हरे हरे। मैं भी इसीलिए बोलता हूं, मैं भी आज से 35 इयर्स एगो एक कृष्णा कॉन्शियस का मैं लाइफ मेंबर हूं, इस्कॉन का ही करेंगे। मित्रों, इस देश में, इस वर्ल्ड में श्री राम का जीवन चरित्र अपनी दृष्टि के सामने रखकर और भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र अपने दृष्टि के सामने रखकर हम जीवन व्यतीत करेंगे तो दुनिया में कोई चिंता नहीं है, हम मर्दानगी से जी सकते हैं। भगवान राम का जीवन पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में होता है और कृष्ण का जीवन धर्म यानी कि कर्म ही अपना धर्म है। उन्होंने कभी सीरियसनेस नहीं ली कृष्ण भगवान ने, मगर जो उसका लक्ष्य था वो जरूर पूर्ण करते थे। आज मैं कहूंगा कि कृष्ण की बाल्यावस्था देखो, आनंद में व्यतीत करते थे।
वो दिनों में सबसे फल हम जिसको बरवाड़ोर बोलते हैं ना, रबारी, उसी के सामने गरीब वर्ग के लोगों के साथ जाकर वो अपना जीवन व्यतीत करता था। जो एक राजा का पुत्र होने के बाद ग्राम्य विस्तार में वो गौ की सेवा करने वाले शेफर लोगों का संतानों के साथ खेलने वाला ये कृष्ण था ही। और जब कृष्ण माखन की चोरी करते थे, किसी के घर में घुसकर वो माखन खाते थे, तो ये 7-8 लोगों की एक टोली होती थी, ग्रुप होता था। वो जब माखन चोरने के लिए जाते थे तो नीचे पहले 4 लोग यूं बेंड होकर रहते थे, उस पर 3 लोग रहते थे, और उसी पर कृष्ण जाकर मटकी में से माखन निकालकर क्या करता था, वो माखन निकालकर अपने आप नहीं खाता था, पहले वो माखन निकालकर नीचे वाले को देता था, और नीचे वाले को देकर उसके बाद उसके ऊपर वाले को देता था, और जो बचा हुआ है वो अंगुली में जो थोड़ा सा चिपटा हुआ है माखन, वो कृष्ण भगवान खाता था। यानी कि दूसरे को खिलाकर खाना ये कृष्ण भगवान का एम था। बचपन से ही देखो, हम सब पहले जो मिलता है तो अपन खाते हैं, और उसके बाद हम गांव को देते हैं, जो बच्चा कुछ देना है कहे। हमने हमारे घर में जो प्रसंग होते हैं, और जो प्रसंग के बाद जो खाना बचता है, तो हम बोलते हैं कि नहीं बेचारे गरीब लोगों को दे दो। वो कृष्ण भगवान की नीति नहीं है, गरीब को देना है तो पहले गरीब को खिलाओ, और उसमें से जो बचा हुआ है वो अपन को खाना चाहिए। वो कृष्ण भगवान का संस्कार है। मित्रों, जिंदगी में जीना है तो आनंद से जीना, मस्ती से जीना। अरे मैं तो कहूंगा कि ये मैसूरी नगरी है ने, ये महलों की नगरी है, ये म्यूजियम की नगरी है, यहां संस्कारिकता की नगरी है। यहां मैं कहूंगा कि आज यहां जिस तरह से वृंदावन गार्डन है, मगर वृंदावन गार्डन में आज इस्कॉन वाले ने भगवान कृष्ण को खेलने के लिए कहा कि तुम मैसूर आ जाओ, और वृंदावन गार्डन खेलने के लिए यहां भी वृंदावन धाम बनाया है। मित्रों, यहाँ मेलों की नगरी है, म्यूजियम की नगरी है। ये पहले मैसूर स्टेट जिन्होंने अपने पसीने की कमाई समाज को समर्पित कर दी थी, अपने मैसूर के लोगों को लिए त्याग और बलिदान दिया था। और हम देखते हैं कि यहाँ चामुंडी माता का मंदिर है, और एक माता जी का मंदिर है, और दूसरा यहाँ नवधाम वृंदावन का आएगा। और मैं कहूंगा वो ये भाई और बहन दोनों मिलकर मैसूर की प्रजा पर कृपा दृष्टि करेंगे। मित्रों, यहाँ बैठे हुए सभी को मैं कहूंगा, जिंदगी में पैसे सभी को प्यारा है। पैसे को एकत्र मत करना। कृष्ण भगवान ने कभी पैसे के पीछे अपना जीवन व्यतीत नहीं किया। अपनी संस्कृति में कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग करके आनंद में रहना, दूसरे को देकर आनंद में रहना, दूसरे को खिलाकर खाना और उसमें आनंद में रहना। दूसरों को देने में जो आनंद आता है वो लेने में आनंद नहीं आता। यहाँ बैठे हुए एक एक आदमी को, एक एक सज्जन और देवियों को मैं कहूंगा कि आपके पैसे कमाने के लिए आप में काफी पोटेंशियलिटी है, काफी शक्ति है। तो तुम्हारी शक्ति के मुताबिक तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे के उपार्जन कीजिए, और उपार्जन किया हुआ पैसे समाज के लिए भी दे दो। समाज के लिए जो आदमी देता है उसको भगवान भी देता है।
हम तो कई बार गुजराती में बोलते हैं कि देने वाले का कभी कम नहीं होता और लेने वाले का कभी भरपाई नहीं होता। सारी जिंदगी लाई लाई करेंगे। मित्रों, जो देने में आनंद है वो लेने में नहीं है। यहाँ साधु संत बैठे हैं, वो उन्होंने क्या किया? अपनी समस्त जिंदगी अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के एक परिवार के सदस्यों को अच्छी तरह से जीवन जीने की पद्धति सिखाने के लिए उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दी। और मैं यहाँ बैठे हुए लोगों को कहूंगा कि कार्य करते रहना, मगर कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। ये व्यक्ति तू कर्म किए जा, फल की आशा मत रख। बिना फल की आशा रखकर जो काम करता है वही कार्य है। ये इस्कॉन मंदिर के हर एक संत क्या अपेक्षा रखते हैं? आज का कार्यक्रम में क्या ये संत कहेंगे कि कल वो मेरा पेपर में फोटो आया नहीं आया, क्या है टीवी में मेरा कुछ दृश्य आया नहीं आया, क्या देखेंगे? अरे उसको कुछ नहीं पड़ी। हमने तो वृंदावन धाम बनाना है, वृंदावन धाम के लिए हम गए थे और सब कार्यक्रम निपटाकर हम वापस अपनी जगह पर पहुंच गए। इतना ही वो कहेंगे, उसमें से सीखना है हमको। मित्रों, यहाँ बैठे हुए हम, ये कोई तमाशा नहीं है कि हम सब लोग देखने के लिए आए हैं। जिसके लहू में आध्यात्मिकवाद का संस्कार होता है और समाज के लिए कुछ करने की मन में जिजीविषा होती है, वही लोग ये कार्यक्रम में आते हैं। हम इस्कॉन का प्रसाद खाने के लिए नहीं आए। हम कृष्ण भगवान की अच्छी मूर्ति बनेगी तो किस तरह से मूर्ति होगी उसका दर्शन करने के लिए नहीं आते। हम धर्म के लिए समर्पित करने के लिए यहाँ आए और अपनी जिंदगी भी इस तरह से बिताना चाहिए। और यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को मैं कहूंगा कि कृष्ण भगवान का चारित्र मर्दानगी पूर्ण था। वो सत्य के पक्ष में थे। गलत करने वाले का विनाश करना वो कृष्ण भगवान का कार्य था। गीता में भी जिस तरह से कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु संतों का, अच्छे लोगों का रक्षण करना और दुष्ट लोगों का नाश करना वो कृष्ण भगवान ने कहा है। सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने करके भी दिखाया। कृष्ण भगवान ने अपना जो मामा था, अपनी मदर का भाई था, वो कंस था। जो कंस दुष्कृत्य करने वाला था, उन्होंने अपना मामा होने के बाद भी कंस का वध किया। मासी पुतना एक जहरीला विचार लेकर कृष्ण को मारने के लिए आती है। कृष्ण समझ जाता है ये मेरी मासी है, मगर वो दुष्ट है, उसी का भी उन्होंने नाश किया। समाज के गाली बोलने वाला शिशुपाल था, वो शिशुपाल का भी उन्होंने वध किया। समाज में ये बुरे बोलने वाले की जरूरत नहीं है, बुरे कार्य करने वाले की जरूरत नहीं है, उसी का भी वध किया। और कृष्ण भगवान ने जब कौरव और पांडव की लड़ाई पूर्ण होने के बाद जो यादव लोग थे, वो यादव लोग लड़ाई जीतकर नशे में आकर पब्लिक को हैरान करते थे। दारू पीकर, दारू में चुपचाप होकर वो पब्लिक को हैरान करते थे। तो कृष्ण भगवान ने ऐसा यादव कुल जो लड़ाई में सशक्त होगा मगर वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, वो यादव कुल का भी उन्होंने नष्ट किया। मैं कहूंगा कि यदि कृष्ण अपने मामा को मार सकते हैं, अपनी मासी को, संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान राम और कृष्ण ने हमको जो उपदेश दिया है, वो उपदेश का हम स्मृतिकरण करके अपने जीवन को अच्छी तरह से हम निभाए
और अपनी जीवन को अच्छी तरह से निभाने के लिए परम कृपारू कृष्ण भगवान और श्री राम हमको शक्ति दे, हम सशक्त बने और सशक्त बनने के बाद हम प्रजा की सेवा करें, अपनापन का विचार छोड़कर पर लोगों का, दूसरे लोगों का विचार करें, ऐसी शक्ति दे। ऐसी भावना के साथ मैं मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ और फिर से इस्कॉन को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन देता हूँ। भारत माता की। यार, कृष्ण के संतान ऐसे होते हैं जिसके आवाज में ताकत नहीं होती तो उसके कलेजे में क्या ताकत होगी। जय जय मातृभूमि की जय जयकार बुलाना तो मर्दानगी से और जोर से बुलाना चाहिए। भारत माता की। और जोर से। कृष्ण ने जब कंस को मारा था और जितनी ताकत लगाई थी ने, उससे ज्यादा ताकत से भी बोलिए माता की जय जयकार। भारत माता की। धन्यवाद। I thank His Excellency for his words of wisdom. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, now we have come to the conclusive part of this memorable event. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. May I request His Grace Toka Krishnadasa, Temple President and Trustee Hare Krishna Movement Chennai and Vice President ISKCON Bengaluru to propose vote of thanks. Hare Krishna. Honorable Governor of Karnataka, Shri Vajubhai Rudabhai Wala, Honorable PWD Minister and District In Charge Minister Dr. Mahadevappa, Her Highness Dr. Pramoda Devi Vadiyar, Honorable MLA Shri Somashekar, Honorable Mayor of Mysore Shri Ravi Kumar, His Grace Madhu Pandit Prabhu, His Grace Jai Chaitanya Prabhu, His Grace Rajiv Lochan Prabhu, guests and all devotees, it's a privilege and a great joy for me to extend a vote of thanks to all those who contributed in one way or the other to make this event a grand success. On behalf of the entire Navabrindavan Dham devotees, I convey my deep regards and sincere thanks to Honorable Governor of Karnataka, Shri Vajubhai Rudabhai Wala, for gracing this event by laying the foundation stone for the upcoming cultural center and also for enlightening us with his inspiring address. ನಮಗೆ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. I would also like to thank Her Highness Dr. Pramoda Devi Vadiyar, the scion of the Vadiyar Kings, whose legacy we at ISKCON very much appreciate and draw inspiration from to build this grand monument for Lord Sri Krishna in the heritage city of Mysore. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ, ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. Our heartfelt gratitude to His Grace Madhu Pandit Prabhu, GBC, President of ISKCON Society and Chairman of the Akshay Patra Foundation, for presiding over this foundation stone laying ceremony. Our thanks are also due to His Grace Jai Chaitanya Prabhu and His Grace Rajiv Lochan Prabhu and all the other senior devotees for participating in this program. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಹಾಗೂ ವನಿತಾ ಸದನ ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ಇಸ್ಕಾನಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾರವಾಗಿ ದಾನ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ದಾನಿಗಳಿಗೂ ಅನಂತಾನಂತ ವಂದನೆಗಳು. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಮನಮೋಹಕವಾದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಘನತೆವೆತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತಿರಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.